Good morning, students. Students, today we will do lesson number 28. What is the answer? Dear children, in this lesson we will solve some numerical questions. Now children, the first one. A carpenter was in a terrible hurry. He had to work as quickly as possible to cut a very heavy 10-foot plank into 10 equal sections. If it takes 1 minute per cut, how long will it take him to get 10 equal pieces? अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि you need 1 minute for one cut and you have to make 10 equal pieces. So what is the time required for making a 10-foot plank into 10 equal pieces? If you think logically, if something is there, suppose a line is there, you need to cut it into 2 pieces, into 2 parts, equal parts. You have to divide it, means one cut is making it into 2 equal parts. So children, in this question, answer will be 9 minutes. मतलब 2 कट करने के लिए हमें 2 पार्ट्स बनाने के लिए 1 कट करना पड़ा, मतलब जितने पार्ट्स हमें चाहिए उससे 1 कम. अब अगर 10 फुट प्लैंक है तो उसको हमें 9 मिनट्स में 9 कट करने पड़ेंगे, तो हमें 10 पीसेस मिल जाएंगे. नाउ चिल्ड्रन, द सेकेंड वन. Which number when added to 5 by 4 gives the same result as when it is multiplied with 5 by 4? Now children, I have solved this question for you. The question says, which number, suppose the number is x, added to 5 by 4, हमने ऐड किया 5 by 4 के साथ, gives the same result, means that is equal to, as when it is multiplied with 5 by 4. अब उसी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 by 4 के साथ, तो वो सेम रिजल्ट दे रहा है. नाउ इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, कैसे सॉल्व करेंगे? 5 by 4 को इस साइड कर लिया और x को दूसरे साइड ले लिया. x को एक तरफ रख लिया, 5 by 4 को दूसरी तरफ. उसके बाद 5 by 4 एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो हमें 5 by 4 is equal to x by 4 मिला. Now x is equal to 5 by 4 into 4. 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो कट हो जाएगा, तो x is equal to 5. So the answer we are getting is 5. Now the third question. In the square below, a rule applies both from top to bottom and from left to right. अब ये जो स्क्वायर है इसमें एक रूल अप्लाई होता है, चाहे टॉप टू बॉटम करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो. फाइंड द रूल एंड फिगर आउट द मिसिंग नंबर. अब तुम्हें रूल को फाइंड आउट करना है और यहाँ जो मिसिंग नंबर है उसको फाइंड आउट करना है. हाउ कैन यू डू इट? 6 minus 2 is 4. 6 minus 2 is again 4. मतलब अगर इस साइड से फर्स्ट वाले नंबर से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करो तो थर्ड नंबर मिलता है. सब्ट्रैक्ट द सेकेंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट टू गेट द थर्ड. तो 4 minus 0 is 4. 2 minus 2 is 0. So our answer will be 2. Next question, the fourth one. A snail is at the bottom of a well and wants to
जो कि बेल्ट के बिल्कुल नीचे, और वो बाहर आना चाहता है। He manages to crawl up the wall 3 feet each day. और वो वेल के वॉल को क्रॉल करता है एक दिन में 3 feet. But at night he must rest. After all that work during the day, and so he slips back down 2 feet. अब रात को उसको रेस्ट करना है, 3 feet वो ऊपर चढ़ा, रात को उसको रेस्ट करना है, और इसलिए वो so he slips back down 2 feet. 2 feet वो नीचे आ जाता है. If the well is 30 feet deep, how long will it take him to get out? अब अगर वेल जो है 30 feet deep है, तो कितना टाइम लेगा पूरे वेल से बाहर निकलने के लिए? अगर तुम इसका एवरेज देखो तो पर डे वो 1 foot ऊपर आ रहा है. Each day he averages 1 foot. इसका मतलब है, और वेल हमारा कितना गहरा है? 30 feet deep है. तो 27 डेज में वो 27 feet ऊपर आ जाएगा, बिकॉज वो हर रोज 2 feet नीचे भी जा रहा है टू गेट हिज स्लीप. So after 27 days he reaches 27 feet. Now on the 27th day, when he starts climbing 3 feet, he completes the 30 feet deep well and he is out of the well. So he will not slip anymore. अब जब लास्ट में उसने 3 feet को कवर किया, वो अब स्लिप नहीं करेगा. इसका मतलब है वो 28 डेज में वेल के बाहर निकल जाएगा. Now we come to the 5th question. Children, in the 5th question, what is the missing number in this arrangement? Now, if you see this box, this number is missing. Now, we have to find out the rule with which they have completed the rest of the box. And then, if we find out the rule, we can apply it over here and get the correct answer. So, if you see this box, first box consists of 1. Now I have solved it. That is I have written how the next number is coming. If you see 1 into 1, 1 into 1 is 1 plus 1, we get 2. In the same way, 3 into 1 plus 1, we get 4. 4 into 1 plus 1, we get 5. Now the second number. In this we have multiplied with 1 and we have added 1. In the next we will multiply with 2 and add 1. 1 into 2 plus 1. 1 into 2 is 2 plus 1, 3. 3 into 2 plus 1, 6 plus 1 is 7. Next one, 7 into 2, 14 plus 1, we get 15. 15 into 2, 30 plus 1, we get 31. Now in the third, we have to multiply with 3 and add 1. 1 into 3, 3 plus 1, 4. 4 into 3, 12 plus 1, 13. 13 into 3, 39 plus 1, 40. 40 into 3, 120 plus 1, 121. Now this applies in the whole series. Now 1, 2, 3, next number will be 4. 1 into 4 plus 1, 5. 4 into 5 into 4 plus 1, 21. 21 into 4 plus 1, 84 plus 1, 85. 84 into 4 plus 1, 340 plus 1, we get 341. So the answer is 341. This is the answer. Now we move on to question number 6.
lilies double in an area every 24 hours. 24 hours में water lilies एक area में double हो जाते हैं. In spring, there is one water lily on a lake. अब एक लेक में स्प्रिंग के सीजन में एक वाटर लिली था. In 60 days, the lake is completely covered with lilies. 60 days के बाद वो 60 days में वो पूरा भर गया लिलीज से. How many days it take to cover half of the lake? हाफ लेक को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा? क्योंकि 24 आवर्स में वो डबल हो जाएगा. अब 60 डेज में अगर वो कंप्लीट हो गया है तो दैट मीन्स हाफ कवर करने में उसको 59 डेज लगा. 60 डेज में तो वो डबल हो के फुल हो गया लेक. सो हाफ लेक में फ्लावर्स लगते जब वो 59 डेज में हाफ था. On the 60th day, it has doubled. It will take 59 days to cover the lake because it takes 24 hours to fill the lake. Now, the 7th question. A bird has a head 12 centimeter. The tail is equal to the head plus a half of the size of the body. The body is the size of the head plus tail. How long is the bird? अब head 12 का है, tail head plus size of the head plus half of the size of the body 36. अब body का जो size है वो head plus tail. Head 12 है और ये 36. So we get 48. अब total bird की लेंथ है 12 plus 36 plus 48, that is 96 centimeter. Hopefully these questions are clear to you. Now the 8th question. A student got thrice as many sums right as he got wrong. मतलब जितने उसके सही हैं, जितने उसके रॉन्ग है उससे 3 times उसके करेक्ट सम्स हैं. If he attempted 96 sums, उसने 96 sums टोटल में किए. How many did he solve correctly? तो उसने करेक्टली कितने सॉल्व किए? Now he got x sums wrong. हमने सपोज कर लिया x sums उसके गलत हुए और 3x sums उसके करेक्ट हुए और टोटल उसने 96 sums अटेम्प्ट किए. That means x plus 3x is equal to 96. So 4x is equal to 96. If we solve this for x, we get 24. मतलब x 24 है. Wrong sums हमारे 24 है. अब right sums कितने हो गए? 96 minus 24 is 72. So his right sums are 72. So 72 is the answer. Now children, we move on to lesson number 29. Think quick. 29th lesson is think quick. You have to do some mental exercise in this lesson and think. If you were to spell out the numbers starting from 1, how far would you go until you would find the letter A? अब अगर तुम स्पेलिंग करके ONE1 करके बोलना शुरू करो तो तुम्हें स्पेल करने में A कब मिलेगा? You will get it when you spell the number 1000. उससे पहले तक कोई A नहीं है. Which is the only food that does not spoil? It is honey. Honey जो है वो spoil नहीं होती. बहुत लंबे समय तक चलती है. Who will weigh more? A boy weighing 22 kg or a girl weighing 22,200 grams? Now boy का वेट तो 22 kg दे दिया है. गर्ल का वेट दिया है
22,000, which means 22 kg and 200 grams. That means the girl will weigh more. Fourth one. What kind of a triangle will be formed if the sides measure 12 centimeter, 8 centimeter and 20 centimeter? There will be no triangle. Why? Because the triangle cannot be formed as the sum of every two sides must be greater than the third. अगर साइड्स हमारे पास 12, 8 और 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब उन्होंने क्या कहा है, ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए दो साइड के सम्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए थर्ड से. दो के दो ग्रेटर बन रहे हैं 20, लेकिन तीसरे वाले का 12 plus 8 20 becomes equal to the third side 20. Whereas if you add 20 plus 8, 28 is greater than 12. 20 plus 12, 32 is greater than 8. But this one is not fulfilling the condition. So no triangle can be formed. Now fifth question. A man is walking east. He makes an about turn, walks a few steps and then turns right. He is walking east. Then he about turn. वो मुड़ के दोबारा वापस चलना शुरू करता है. And walks a few steps and then turns right. Right turn ले लिया and then again turns right. तो वो कौन सी डायरेक्शन में है? He is now in the east direction. Now children, the sixth question. Two identical buckets are filled to the brim with water. One of the buckets has a plastic ball floating in it. The plastic ball has a lower density than water. Which bucket weighs more? Now they both will weigh the same because of the Archimedes principle. The ball displaces the same amount of water as the weight of the ball. Next, seventh question. The sum of two digits of a number is 11. If you subtract 27 from the number, the digits are reversed. What is the number? अब एक इक्वेशन हमें मिला x plus y is equal to 11. दूसरा मिला है 10 plus 1 11 minus अब इसमें से subtract हो रहा है 27 from the number. The digits are reversed. 10y plus x. If you solve this, you will get x minus y is equal to 3. And if you solve this, you get x plus y is equal to 11. हमारा ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2. इसको सॉल्व करने पे हमें x की वैल्यू 7 मिलती है, जिसको अगर हम सेकेंड इक्वेशन में डालें तो y की वैल्यू 4 मिलती है. सो द आंसर इज 74. नाउ द एट्थ क्वेश्चन. A certain crime is punishable if attempted, but not punishable if committed. What is it? It is suicide. अगर कमिट कर लिया तब तो कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, लेकिन अटेम्प्ट करने में पनिशेबल है. How many square inches are there in a square foot? 1 square foot is equal to 144 square inches. Next, 10th question. You walk into a room where there are already 10 people who are 20-year-old, 9 who are 19, 11 who are 18 and 10 who are 30. How many people are there in the room? अब जितने रूम में लोग थे उनको आपने टोटल कर लिया प्लस यू योरसेल्फ. So the answer is 41. Hopefully you have understood all these mental exercises, questions, and you will complete your work and send it to me. Thank you, children.